आज दिल्ली एमसीडी चुनाव के संबंध में बात करना है, मगर उससे पहले बहुत पब्लिक चर्चा में जो विषय है उसको उठाना चाहती हूँ। Let me make it plain that the topic which we are talking about has gained a lot of traction already in the public space. It relates to the findings of the Shunglu Committee. I like to trace it back a bit. In 2015, there was clearly an attempt by the Delhi government, particularly by the Chief Minister, to put it on record that they will decide on matters without the files even reaching the Lieutenant Governor. And subsequently, a lot of decisions have been taken, which came under severe criticism by many, inclusive of the BJP. Vijayendra Gupta ji had raised it in the House, in the Delhi Assembly, and the party has already been speaking about it. However, you are aware that this matter went to the Delhi High Court on the issue of actually who is the administrator of Delhi. And on that, I think that was in early August of 2016, when the court came out with, the High Court came out with a clear view that it is indeed the LG, the Lieutenant Governor, who's the administrator, and it is with his permission and with his due consent, the decisions of the Delhi government will be taken. And any decision taken by the Delhi government without his approval will be considered illegal. So the court went that far, the Delhi High Court went that far. And based on the court's decision, which came early August 2016, there was a committee appointed by the LG consisting of 3 eminent citizens who've held very important portfolios before. Shunglu, after whom the committee is named, is the former Chief Controller and Auditor General, CAG. N. Gopal Swamy was the former Election Commissioner, Chief Election Commissioner. And then it also had the former CVC, Shri Pradeep Kumarji. This committee went into, what we understand, nearly 404 files in which decisions between 2015 and 2016 were taken. Those 404 odd files were reviewed by this committee, and a report has been submitted to the LG as of November 2016. Now, therefore, the copy officially is with the LG as reported in the press, and in the meanwhile, we understand through RTI, copies of this report have been obtained, and some have also been circulated. And therefore, everything that we say here is based on what is already reported by you, the media. The copy officially is not circulated to anybody except those who have obtained it through the RTI. So let's be clear on that. But with the media having gone through it, and with the kind of allegations which are now being recalled by the media, I think it is very important for us to recognize
at a time when Delhi Municipal Corporation is going for its elections, for us to recognize that the attempt by the government of Delhi, violative of established legal and constitutional positions, will have to be questioned, and we demand answers be given or clarifications be given by the Aam Aadmi Party, because it can't be both ways. You can't be constantly seen, charged, and also questions raised about illegal, unconstitutional, and decisions which are not tenable on the one hand, and on the other, for you to claim more goodies that you will offer to the people of Delhi. We need to understand if Aam Aadmi Party and the Chief Minister in particular understands the contours of what his position in Delhi is and the contours within which he can take decisions about Delhi. The kind of information through the media that we would like to raise here pertain very, very seriously on issues of propriety, on issues of making decisions on terrains, on subjects on which Delhi government has absolutely no role to play. And therefore, just for the convenience of this narrative, I've put it into broad four categories. I will raise with examples which are through the media those issues on which maybe all our colleagues sometime during the course of this campaign will periodically ask Aam Aadmi Party for answers. Evading answers will not help because people will see where you are. Avoiding answers will not help because people can see that you are evasive. And misleading the people on these questions will certainly blow back on whoever is misleading, because people are here to see what you've done and what you've not done as per the rules or the constitution or the legislation powers that are provided to you. So the broad categories under which questions are being raised as a result of what we know are the findings of Shunglu Committee are: first, the appointment of personal staff of ministers. Not one, not two, several of them. I can give a few names, for example, which I think the media today will completely be aware of, but it is important for us to recall. The second is the unapproved foreign travels, on which I will raise the question and leave it for them to answer. Let them say it has not happened. It has happened indeed with the permission of the LG. The third, allotment of quarters. You know, Delhi, the land-related matters, particularly on Lutyens Delhi, the allotment of houses is not under the purview of Delhi government. So that calls for a questioning of, do you know what you're up to? Do you know your powers? And are you doing it knowing where you can and where you can't? And finally, other questionable actions under which several things can come, but I will raise one or two and leave it at that. As I said, 404 files. And after this, the report being given to the Lieutenant Governor in November, post which a lot of discussions and public flow of information has happened. RTI has brought the report out. I will just raise the few questions that I need to raise here because we are not talking off the cuff. We are deriving from the information which is in the public domain, be it through the RTI or be it through the media themselves. Nikunj Agarwal's appointment as OSD to the Health Minister. He is a relative of Arvind Kejriwal. Is that allowed? Is there no nepotism in this decision? What brings Nikunj Agarwal and nobody else into that position? Second, Roshan Shankar, appointed as advisor to the Tourism Minister. Abhinav Rai, appointed to the Transport Minister. Rahul Basain and Gopal Mohan. Again, Gopal Mohan is a very close associate of Arvind Kejriwal, appointed even to the CM's own office. Are these being done? And they are being questioned by the Shunglu Committee's report, according to the media. Even worse is the appointment of Satyendra Jain's daughter, who is an architect by profession. But she is appointed to head the health mission
the mohalla clinics and related matters on which a lot of public promise has been given. You want to run it through your health minister's own daughter, who has no special expertise in it, but she's an architect, good enough for the job. She may or may not have drawn the salary, but it was a position worth 1.15 lakh per month as salary. And this position was given to Satyendra Jain's own daughter. All these clearly raise the question of nepotism, and I'm sure these are questions on which somebody is going to the people asking for votes, whether it's for the Municipal Corporation of Delhi or for anybody else, has to answer these questions which are being raised. And if this is broadly on the personal staff to the ministers, the next question on which we like to raise a broader set of questions are on the allotment of quarters. Type 5 quarters, which is not under the eligibility for Akhilesh Pati Tripathi, who's an MLA, is being allotted. On what basis? And do you have the authority to allot houses? Second, MLA in Delhi doesn't, Mr. Vijayendra Gupta is correctly reminding me, MLAs in Delhi Legislative Assembly do not get, as per entitlement, any quarters at all. But he's been allotted a house, and that to a type 5. Then 206 Rouse Avenue gets allotted apparently to a minister, but actually gets allotted to the party, Aam Aadmi Party. What is this? You have no right, first of all, to allot, and then you allot it for your own party. Is there any limitation on misusing discretion by the Chief Minister of Delhi? And in the course of course, allotment of quarters, the Delhi Commission for Women chairperson is not entitled for any quarters, but she gets one allotted. I said I'll broadly raise under 3 or 4 categories issues which are raised by the Shunglu committee based on the 404 files which have been reviewed. Decisions which are flamboyant, decisions which require a lot of money-based allocations, such as the premium bus service which was launched by the Transport Minister Gopal Rai. That apparently is also questioned by the Shunglu committee. And that decision apparently has been faulted as a faulty decision. Now, if these are all the broad kind of issues, specifics with which the committee is raising the questions, and even as the 404 files went over to be reviewed by the committee and the committee to pass a view on it, with the High Court having already said that the LG is the administrator, without whose permission decisions taken may be considered illegal. It is really odd that the Delhi government's response to this whole matter is not on saying, no, sorry, none of this happened. Delhi सरकार ये नहीं बोल रही है कि ये सब गलत है, ये कुछ नहीं हुआ, इसीलिए कमेटी के जो भी फाइंडिंग्स है वो गलत है, ये नहीं बोल रहे, मगर बोल रहे हैं कि this committee is completely illegal. देख लो, 404 फाइल्स के द्वारा आपके हर एक डिसीजन को जो एलजी के परमिशन के बिना आपने निर्णय लिया उसको गलत ठहराए. And the broad principle comes from the High Court itself. Na, committee is illegal is the response from the Delhi government. आप ये बोलो जनता की सुविधा के लिए, जनता के एश्योरेंस के लिए, जनता के भरोसा कमाने के लिए कि भाई ये सब गलत है, ये सब कुछ भी नहीं हुआ. नहीं हुआ है, मगर ये बोल रही हो ये कमिटी इलीगल है. And then you're saying, what is the motive of getting this report now before the MCD elections? I'm quoting, I'm reading from the court. What is the motive? The report was submitted in November. तब से ये पब्लिक डोमेन में बातें चलते रह रही है.
आप डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रही हो कि एमसीडी चुनाव में हमें गलत ठहरा रहे। ठहराना नहीं है, आप तो गलत ही करते आ रहे हैं। So the Delhi government and the Aam Aadmi Party's response is typical. Instead of answering questions to win the confidence of Janata, they are only constantly putting blame on others. The scoot technique, the spit and run technique will not work this time. I demand replies from the Delhi government on all these and more, which are likely to come in the forthcoming days. Thank you. आप कुछ बोलें? उज्ज्वल से ज्यादा ही हिंदी में बोले। 2015 से दिल्ली सरकार बहुत ऐसे निर्णय लिए हैं जो एक्चुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन के सिवाय लेना गलत था। पब्लिक में इसका बहुत चर्चा हुई, विपक्ष में बैठे हुए हमारे नेतागण उसके बारे में बार बार क्वेश्चन भी करते आए। मगर दिल्ली हाई कोर्ट में जब केस चला और अगस्त 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय जब पहुंचा कि हाँ, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन के बगैर जो डिसीजंस लिया गया है वो गैर कानूनी होगा। फिर 404 एक ऐसे फाइल जो 2015 से 16 तक दिल्ली सरकार के निर्णय के ऊपर जो है वो कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी एलजी ने कमेटी बनवाए हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद, और नवंबर 2016 में शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट एलजी के पास सबमिट भी हुआ है। उस कमेटी का फाइंडिंग्स के ऊपर बहुत सारे चर्चा ऑलरेडी नवंबर से हो रही है। आरटीआई के द्वारा किसी ने उस कमेटी रिपोर्ट को मंगवाए और पब्लिक में वो आजकल सर्कुलेशन में भी है। उससे निकला हुआ कुछ विषयों के मैंने आज उठाए, जिसमें रिश्तेदारों को अपॉइंटमेंट करना और नॉन एलिजिबल पर्सन्स को अपॉइंट करना, उनको तनख्वाह भी 4 गुना देना। एक आई हैव नॉट गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ समबडी, यूडीसी के लेवल पर अपॉइंटमेंट होना था, उनको अपॉइंटमेंट कर दिया ओएसडी के लेवल में, यूडीसी के सैलरी से 4 गुना ज्यादा सैलरी उनको दिया भी है। ऐसे बहुत सारे एब्सोल्युटली गैर कानूनी डिसीजन हुआ है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उसके ऊपर जवाब देने का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के ऊपर है। जहां हाउस अलॉटमेंट तक नहीं कर सकते हैं, आप अलॉट भी किए और आपके पार्टी को भी अलॉट करके बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो विस्तार से मैं आपके सामने रखे हैं। मैं मानती हूं इसका अवॉइड करना, इवेड करना, जवाब ना देकर आप घूमना फिरना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनता आपके ऊपर भरोसा खो चुकी। आप जवाब देने का हालात में हैं, आप जवाब देना ही है। एक मिनट, कैन आई जस्ट आस्क माय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी to speak a minute, after which I would also ask Vijendra Gupta ji, because it pertains to them, to speak. हाँ, आपने बहुत ध्यान से सारी बातें हमारी केंद्रीय मंत्री और इस चुनाव में एमसीडी के लिए स्पेशली अपॉइंट की गई हैं, इसको देखने के लिए चीज़ों को निर्मला सीतारमन जी ने आपके सामने रखा। 400 फाइलें और 400 फाइलों में हर फाइल में फॉल्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जब नॉमिनेशन करता है लोग और नॉमिनेशन में एक छोटा सा फॉल्ट हो जाता है तो नॉमिनेशन रद्द हो जाता है।
तो जिसने 400 फाइलों में हजारों फॉल्ट किए, उसको क्या अपने पद पे रहने का अधिकार है? ये मैं इस देश की सभी जो जिम्मेदार एजेंसीज हैं उन पे छोड़ता हूं। मैं समझता हूं ये सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में अपने सारे कार्य करने की अधिकार खो चुकी है। गरीबों के पॉकेट से निकलने वाले पैसे का दुरुपयोग किया है और जितना जल्दी हो सके इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह हमारी मांग है। साथियों, फॉरेन ट्रिप्स की जो सीतारमन जी ने बात की, अप्रूवल नहीं लिया एक बात है, लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों मंत्रियों ने जो नॉन एंटाइटल्ड क्लास थी, फर्स्ट क्लास, उसमें ट्रैवल किया विदाउट किसी परमिशन के, और वो परमिशन देने का अधिकार किसी को नहीं था। लेकिन आपने लग्जूरियस फॉरेन ट्रिप्स किए, और वो जो फॉरेन ट्रिप्स किए उसमें आपने पर्सनल एजेंडा रखा। जब सौ पोलो आप उतरे तो वहाँ से आपने जो डेस्टिनेशन था, जहाँ सेमिनार थी, वहाँ के लिए 7.5 लाख रुपए की टैक्सी हायर की। यानी कि सीधा फ्लाइट आपको वहाँ जाना चाहिए था, सो कॉल्ड जो भी आपका प्रोग्राम था, लेकिन आपने पहले नॉन एंटाइटलमेंट में ट्रैवल किया, दोनों मंत्रियों ने अलग अलग बार, और साओ पोलो में आपने टैक्सी में ट्रैवल किया, बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट साइड पे। एक तरह से उसको एक पिकनिक ट्रिप इन्होंने लग्जूरियस, एक प्रिविलेज, एक टूरिज़्म पर्पस से उस टूर को अरेंज किया, और टूरिज़्म पर्पस से उसमें वो आगे गए। कैबिनेट मिनिस्टर्स ने को टर्मिनस में 80 पोस्ट क्रिएट की, जो पोस्ट क्रिएशन का कोई परमिशन नहीं लिया गया, और उनको एग्जॉर्बिटेंट हायर साइड पर लाखों रुपए में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो मास स्केल अपॉइंटमेंट इन दिल्ली कमीशन फॉर विमेन हो, और पीडब्ल्यूडी में क्रिएटिव टीम हो, कुल मिलाकर के बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर खुलेआम वायलेशन हो रहा है, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स हो रहा है, क्रिमिनल वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। इसके साथ साथ मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पोजीशन, भाई भतीजावाद, और आशीष खेतान जैसे लोगों को सरकारी सिस्टम में लाखों रुपए की फैसिलिटीज़ देकर यहाँ जोड़ा गया। ये पूरा सरकार का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद कोई मॉरल राइट नहीं है इनको, लोगों के सामने आएँ और एक क्लैरिफिकेशन दें और जवाब दें जो शुंगलू कमेटी की फाइंडिंग्स हैं, ना कि कमेटी के ऊपर आरोप लगाकर और भाग जाएं और उसको पॉलिटिकल कलर देकर छोड़ दें। ये हरगिज़ हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। First of all, I feel like having a good smirk and a smile on my face. Who's asking? Congress. Shunglu committee first should shake them up. Wasn't it again one Shunglu committee which pointed out what they did in Commonwealth Games? Amazing. They are talking about another Shunglu committee without answering about the earlier Shunglu committee. Now, what the LG would do with this report is a different thing, and what action will happen is a completely different story about which I may not be in a position to speak now. But surely, on who these questions are being raised, on the impropriety, and also about the nepotism on which so many examples are being cited, on which nobody from Aam Aadmi Party is denying, we need explanation. We need an answer. How can this kind of a thing, not one, not two, several decisions go wrong, and you are sitting pretty without even bothering to answer? That's what is important now.
I can. Well, certainly the campaign which is happening, going down to the mohallas, nukkads, the president himself is there running the campaign. In the assembly, you have the leader here, Vijendra Gupta ji. We are very happy to hear he is saying, "Aaj se main galiyon mein ja rahi hu." All our campaign, we will take this message across. And of course, we depend a lot on your support too, because you should raise questions which are relevant to the people. नहीं, एक मिनट, नहीं, एक करेक्शन पहले, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, ये रिपोर्ट नवंबर में एलजी के पास सबमिट हुआ है। आरटीआई के द्वारा जो निकाले हैं इसका वो अलग बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी क्लियर, जहां तक मेरा जानकारी है नवंबर में एलजी के पास सबमिट हुआ है, उसके आगे मुझे कुछ जानकारी नहीं। वेरी ठीक है, अगर स्टेटमेंट किया है तो एलजी ही और हुएवर इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ एलजी may आंसर इट, नॉट मी। सुजीत ठाकुर, आप जवाब देंगे? नहीं, हम बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। हमने यही कहा कि अगर एक छोटा सा साइन करने के लिए, छोटे से फॉल्ट के लिए अगर किसी व्यक्ति का नॉमिनेशन चुनाव लड़ने के लिए रद्द हो सकता है, तो जो व्यक्ति ने 400 फाइलों में फॉल्ट किया उसको जल्दी से जल्दी क्यों न रद्द कर दिया जाए? नहीं, उस सरकार को, इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, एक मिनट, ये गलत फहमी हम दूर करें पहले। ये रिपोर्ट आपके सामने है नहीं जी, एलजी के पास सबमिटेड है। जहां तक मेरा खबर है वहां तक ही पहुंचा है, उससे आगे मुझे मालूम नहीं है। इसीलिए उससे आगे क्या होगा उसके ऊपर मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को जवाब दे नहीं पाऊंगी। पूछिए, एक मिनट। एलजी से पूछिए। एलजी से आगे कहीं नहीं है। ये तो कोई इशू नहीं है। दिस इज नॉट दी। Yeah, but today I will focus on Shunglu committee, and as regards ticket distribution, we'll be talking later. अभी कितनी बार इस्तीफा मांगे? मांगते मांगते थक गए भैया। तो ऐसे नैतिक, जिसका नैतिक चरित्र हो उससे इस्तीफा मांगा जाता है। तो अब इनको तो सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। एक एक करके। देखिए, दो जगह केस है। एक है संविधान के दायरे में, और बिल्कुल सही कहा मैम ने कि कुछ लोग, जैसे कांग्रेस ने कहा सीबीआई जांच। अरे यहाँ फैसला आ चुका है, आप जांच की बात कर रहे हो। आप क्यों बार बार शो करना चाहते हो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं? आप क्यों ऐसे फील कराना चाहते हो? हम बोलना चाहते हैं कि ये शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है और ये फैसला है, इस फैसले पे अमल होना चाहिए। इसलिए कुछ लोग डाइवर्ट करने की कोशिश न करें। दूसरी बात कि हम न जाने कितने मुद्दे, जब 97 करोड़ यहाँ के खर्चे हुए उनके पर्सनल खर्चे पे, तो भी हमने कहा इस्तीफा दो। जब उन्होंने यहाँ पे अभी 3 करोड़ 80 लाख रुपया वकील पे खर्च कर दिए, अपना पर्सनल केस खर्च कर रहे हैं,
जनता की गरीबों के पैसे से, तब भी हम मांग रहे हैं। इसके पहले भी न जाने कितनी बार जब हवाला कारोबार में फंसे सत्येंद्र जैन, तब भी हमने इस्तीफे की मांग की। जब उनके फर्जी डिग्री धारी में फंसे विधायक, तब भी हमने मांग की इस्तीफे की। तो हम तो मांग करते करते ना अभी हम थक गए हैं। अब इस्तीफा मांगते 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 थक गए हैं। अब एक तो कानून के दायरे में है, दूसरा अभी एमसीडी के इलेक्शन में जनता के पाले में फैसला है। जनता के गरीबों के पैसे को लूटा है, जनता जवाब देगी। दोनों में हमारी डिमांड है कि इस केस में न्याय होना चाहिए। कौन? वो कांग्रेस का अपना एजेंडा जो है। थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं, अभी हम अगली मीटिंग उसमें बताएंगे। नहीं, I've answered that. I've answered that when somebody asked. बहुत बहुत धन्यवाद।